أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. We promise to each other to unite to bring Kashmir out of this misery, out of this evil thing which is happening, and out of occupation. Now, as the director of the interfaith for Friend of Kashmir, I talked many times to the President and the Prime Minister of the Kashmir, of course, Abdul Masood, many times, and I advised him on how we can do, what we can do. It is not only Pakistan can do help it, it is not only India can help it. We have to all get together. Everybody else has get together to take these ones. It is very important, my brothers. We have interfaith around the 6 billion people going around it. 6 billion people under interfaith. I talked to the president and he said, yes, we can do it. And alhamdulillah, I was arranging for him for his visit with Lord Byrne, which is the head of the interfaith, Minister of Interfaith, and of course Archbishop of Canterbury. We were trying to do 3 days before his coming, everything is stopped. He says, and of course within 3 days that was the occupation that started. We knew something happening. However, we never stopped. We united, we're going forward, my brothers and sisters. It's very important we be united. We are not united. Our scholars are not united. I am here as one of a scholar. Our scholar is not united. We are not united. If we are united, we win. If we are not united, 70 more years we sit here, we get nothing. Did you hear me what I'm saying? Let's put all the differences behind. The brothers are here from the 6 temples, 6 people. They come in here. But we are, many of us, coming very late. The brothers are so many. Do not try hard. Give a free food. Give to come in here. The brother come in. They don't come in here. I can see it's empty. It's very important, my brothers. All united. For the sake of Almighty Allah, for the sake of Kashmir, they take in the Palestine, they take in the Palestine, they take in the Burma Rohingyas, they take in the China's Uyghurs, and of course the Kashmir. It's very important we unite. We unite not only Muslims, but the non-Muslim, all get together, and inshallah we will win. I never stop myself. I'm coming from Oxford anytime the brother says, 40, 50 miles. But the people from even around us, I do not want to criticize. I want to say, let's be united. Let's be united, inshallah. And be free Kashmir. Free Kashmir, inshallah. The rights of every person are diminished when the rights of one person is threatened. Located in Himalayas mountain, Kashmir is rich in resources and diverse in history. And the struggle of freedom has started long before the creation of India and Pakistan, and it's continued till today. Since then, at least 100,000 dead, just over 7 decades, 3 wars between 2 nuclear-armed states, one on the brink currently of war, and countless human rights violations. This is the story of Kashmir. Good evening and Assalamu alaikum, everyone. I'm pleased to see today that various organizations have come together on one platform to show the unity and solidarity in raising awareness of human rights violations, ethnic cleansing, and genocide in Indian-administered Kashmir. And for this reason, I cannot stress enough that when it comes to human rights as an individual and as an organization, we cannot be separated in interest or divided in purpose. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly,
and always pursue unity and solidarity against the human rights violations and equally for the rights of self-determination for Kashmir. Human rights abuses are an ongoing issue and have been an integral part of a campaign by Indian Army against defenseless Muslim Kashmiris, particularly since 1990. The views range from mass killings, enforced disappearances, state-sanctioned torture, rape, molestation of Muslim women, sexual abuse to political repression, suppression of freedom of speech, disproportionate use of brute force, including use of cluster bombs, and excessive use of pellet gun resulting in permanent eye damage. These pellets do not recognize and differentiate between age, gender, and disability. The lasting psychological damages as a result are unrepairable and unbearable. In order to suppress the voice and reaction against revoke of Article 370 and 35A in Jammu and Kashmir, a 24-hour curfew has been imposed till this day in all 10 states, resulting in continuous 27 days, hence affecting and therefore not meeting an essential requirement of food and medical supplies for Kashmiri people in that region. Conference today, I stand in front of you as a human rights activist, a mother, a sister, a wife, and a daughter, raising awareness and voice against all barbaric, ongoing atrocities and clear human rights violation. Kashmiri nation, our sisters, mothers, and daughters are looking for an international support, and we, as an overseas Pakistanis living in UK, being part of the largest democracy and known for standing up for human rights, should stand tall, united, and in solidarity against these war crimes, and ask UK government, the United Nations, and all key global strategic players having vested interest in Kashmir in this region to intervene, engage, and challenge Modi government to stop this ethnic cleansing, genocide, and these atrocities against humanity. We should continue to raise our voice in support of Kashmir from every platform like today, including social, online, digital, print, raising it in UK and European Parliament and in the form of protest to give a clearer message of standing against human rights violations and for Kashmiris' rights of self-determination. I therefore conclude by saying thank you very much for giving us this opportunity to talk about this. Let's keep raising our voice and let's bring this to the attention of those who will eventually play an integral part in resolving this issue, which is already 7 decades too late. You and many people here I've seen are very vocal on the Kashmir cause. I've been assisting in my capacity over the last 30 years. And this is one time now I can see some sort of tangible result coming out. With diplomacy, our proactive activities for yourselves, and our colleagues and friends here, I'm sure we will see a positive result in the coming months. I'm sure the Pakistan government or friends of Kashmir will appreciate the work all sincere are doing. Thank you very much. The most important thing, I think, has been said many a times, is unity. Unity is required amongst all people, regardless of religion and regardless of caste. The second most important thing is we are all oppressing freedom of Kashmir and freedom of people. Forgetting is this human rights violation to an extent never seen before in any nation. I was sent some videos today from Kashmir itself, absolutely appalling. The streets are filled with blood. We need to press Pakistan, we need to press the British government, we need to press the European Union to get action immediately to stop this human rights violation that are taking place. We can discuss a million things afterwards. But first and foremost, we need to press to stop this human rights violation, which is very, very important. Thank you. Absolutely. Thank you very much. आप सब लोग जानते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त जो खून की होली खेली जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू था जिसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। और मुझे ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ सिर्फ 3 मीडिया चैनल्स हैं
اور समझ नहीं आ रही है कि हम तो अपनी जो आवाज़ है उसको उठा रहे हैं, पाकिस्तान में, यूके में भी, जहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, हम अपनी आवाज़, यूरोप में अपनी आवाज़ बंद करें, लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों खामोश है। ये एक सवालिया निशान है हमारे लिए कि हम यहाँ अगर बरतानिया में रहते हैं तो हम अपने यहाँ की जो होस्ट कम्युनिटी है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको इतना मोबिलाइज क्यों नहीं कर सके। इट्स नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स के वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जहाँ इंसानियत की बात आती है तो मेरे ख्याल से फिर चाहे कोई भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, किसी भी गुरों से आपका ताल्लुक हो, किसी भी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक हो, आपको वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम किसी भी एक इंसानियत को बचाने में कामयाब हो गए तो हम पूरी इंसानियत को बचाने में कामयाब हैं। हम इंटरनेशनल मीडिया बड़ी ताकतों को, इंटरनेशनल मीडिया को बेदार कर सके, लेकिन पिछले 23 दिन पहले जो उस मोदी सरकार जो बहुत बड़ा मुनाफिक है, उसने 370 और 358 जो एक्ट उसको जो ख़त्म करके उसने ये मुनाफिक जो वो की कि जो 1948 की जो करारदादें थी उसमें ये कहा गया था कि जो फौजें हैं वो वापस जाएँ और दूसरा राजमारी कराएँ। सबसे बड़ी बात ये है कि यूरोप में तो सब लोग कर ही रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि मेरी वाइफ, उन्होंने आज मुझे ये कहा कि अगर भूख हड़ताल के लिए भी जाना पड़ा तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के बाहर बैठूँ। वेरी गुड। और उनकी और चैंपियनशिप कहा गया क्या कश्मीरी इंसान नहीं है, सिख इंसान नहीं है, इंसानों का खून हो रहा है और ये तजारत के मतलब डबल स्टैंडर्ड जो है इनको बाहर निकाला है आपने। और इसके लिए ज़िंदगी के लिए आप जो काम करते हैं इसी तरीके से मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला जो है वो खालिस्तान का मसला है, ये आपको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक, मुजाहिरों की हद तक नहीं होना चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा जब बनेगा तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा कि सब लोग जो है आज़ादी में। जिस दिन तो कश्मीर दे विच जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने जुल्म शुरू किए हुए हैं, असी कश्मीर की मूवमेंट के नाल 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने पहला तो नहीं, असी उस दिन तो कश्मीर की मूवमेंट के नाल जुड़े हुए हैं जिस दिन तो असी होश संभाली है तो सानू पता लगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत कश्मीर, पंजाब ते हिंदुस्तान दे विच होर स्टेटां दे विच जुल्म करती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है। जिथे भी जाइए कश्मीर कौज वास्ते खड़े होंगे, खालिस्तान मूवमेंट तो चला रहे हैं, लेकिन है कि कश्मीर वास्ते जो सिख भाई साढ़ा साथ दे रहे हैं, असें इन्हों कभी भी नहीं भुलांगे और इंशाअल्लाह इन्हों का वक्त आया असें इन्हों कंधा ना कंधा मिला के खड़े रहांगे वो इनफ आ। और मैं समझदा कि जिहड़ा पाकिस्तान आ अज जे कश्मीरी देख रहे हैं एको ही मुल्क है जिस तो उन्होंने शायद कोई उम्मीद है वो है पाकिस्तान। सो उसनूं संजीदगी दे नाल कश्मीर के मसले के उत्ते बाहर होना चाहिए है। और जिथे दूसरिया इस्लामिक कंट्रीज़ आ तकरीबन अरब कंट्रीज़ उन्होंने कोल पैसे की किसी भी घाट नहीं गी, सो उन्होंने भी इस दे लई बाहर होना चाहिए है, ना कि सिर्फ वैसटर्न कंट्रीज़ की सॉरी टू से कि असी चापलूसी ही करनी आ। सो जड़ियाँ अरब कंट्रीज़ आ उन्होंने जिन्नियां भी इस्लामिक कंट्रीज़ आ उन्होंने कश्मीर का मसला जोड़ा UN दे विच लेके जाना चाहिए और स्ट्रोंगली लेके जाना चाहिए है, ना कि एक असी मीटिंग करके छड़ दईए। इसनूं संजीदगी दे नाल ते एक स्ट्रोंग तरीके दे नाल उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहिए है। सो इन्हां लफ्ज़ां नाल मैं तुहाडों खिमा दा जाच करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। तुम्हारे पीछे इंडियन ओशन है, हमारे पीछे अफ्रीका तक ये सारी मुसलमान ही मुसलमान कर रही है। हम यहाँ से लड़ाई छोड़ेंगे, अगर यहाँ तुम आते हो हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, जंग तुमसे जारी रखेंगे चाहे जितने 1000 साल हो, हम तुम्हें नेस्तो नाबूद करके इंडियन ओशन में फेंक देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान कश्मीरियों का पुष्पना रहा, इसमें कोई शक नहीं है। 3 जंगें हुई हैं, उस वक्त पाकिस्तान भी आदमी ताकत नहीं था और हिंदुस्तान भी नहीं था। कारगिल का मसला आया, कारगिल में पाकिस्तान ने इंडिया की गर्दन दबोची, सियाचिन में पाकिस्तान और इंडिया को फंसाया गया। आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि इस पैगाम को शहर शहर पहुँचाएँ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँचाएँ और 1 सितंबर रोज़ इतवार लंदन इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाएँ। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँगा और मैं आखिर में मीडिया का फिर मशकूर हूँ कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया।
you.